वैसे तो हम सब मुंबई को मानते हैं एक सपनों की नगरी, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहां पर सारे बड़े बड़े एक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं सब मिलजुल के, एंड देन देयर इज द एडिक्टिव fast paced culture. However, there is also a dark side to the bustling mega city of India, which is road safety. ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि a recent Mumbai police report has shown that while Mumbai is rated among the safest cities for women in India, that might not be the case when it comes to road safety. And in this episode of Autohead, I will share some statistics that may even surprise you. So stick around. देखिए, the Mumbai police report clearly states that in 2023, 351 reported vehicle crashes took place within Mumbai, जिनमें 374 people unfortunately lost their lives. For perspective, this brings out an average of 3 road accident fatalities for every 1 lakh Mumbaikars who commute within the city every day. भाई देखिए, ये तो हो गया macro view, but it gets even more alarming as we start taking a more micro view into these figures in terms of कैसे, कहां और किन के साथ ये रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं. The data clearly highlights that out of the total fatalities that were caused among road users, 40% were pedestrians, मतलब पैदल चलने वाले लोग, and 48% were occupants of 2 and 3 wheelers. अब आप ये देखिए कि सिर्फ ये 2 कैटेगरीज ही बना देती हैं majority of fatalities, and it should be a big reality check for all of us who live here. इसी बात पे एक और reality check दे देता हूं that you might not know of is that 38% of all lives lost on Mumbai roads were involved in a hit and run incident, और इतना ही नहीं, 54% of those were victims who were pedestrians. मतलब आप ये समझिए कि भले ही आप सिर्फ पैदल चल रहे हो, आप फिर भी सबसे ज्यादा रिस्क कैटेगरी में आते हैं ऑन मुंबई रोड्स. मुंबई पुलिस की इस रिपोर्ट में मोस्ट हाई रिस्क स्पॉट्स की इंफॉर्मेशन भी आइडेंटिफाई की गई है. द हाईली यूज्ड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सायोन बांद्रा लिंक रोड और बैंगनवाड़ी इलाके हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द हॉट स्पॉट्स जहां सबसे ज्यादा रोड फेटालिटीज रिकॉर्ड होती हैं. वर्ली सी फेस और सायोन पनवेल हाईवे भी इस लिस्ट में मौजूद हैं. इतना ही नहीं, इन टर्म्स ऑफ मोस्ट इंजरीज एंड फेटालिटीज रिकॉर्डेड बाय किलोमीटर, घाटकोपर, मानखुर्द लिंक रोड एंड बाबा साहेब अंबेडकर मार्ग हैव द हाईएस्ट एवरेज ऑफ 10 फेटालिटीज पर किलोमीटर. जहां तक रही बात कॉजेस की, तो इनमें द टॉप वायलेशंस लीडिंग टू सो मेनी एक्सीडेंट्स इन मुंबई इंक्लूड नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग, नॉट वेयरिंग अ हेलमेट और सीट बेल्ट, and drunk driving among other grievous violations. That the police and authorities are working hard to bring such incidents and loss under control, and the data shows that too. We see that these incidents have a major drop of 39%, which is considerable. And to be honest, after looking at the data points, in my eyes, I think that the majority of the responsibility falls on us who are living in this beautiful and welcoming mega city. We need to ensure that we are not ignorant as pedestrians, following signals at the traffic light and not being distracted by our smartphones or simply jaywalking on main roads. As drivers, we need to ensure that we follow all traffic rules and report people who aren't, and so much more needs to be done. जिसके बारे में हम जानते तो हैं ही, मगर खुद को या फिर दूसरों को डिसिप्लिन नहीं करते हैं to follow these rules. Overall, I hope that this quick video puts some perspective to the big picture behind following the small traffic rules that feel unnecessary or inconvenient at times. Let me know what you think in the comment section below.